Hi all, welcome to PTL Computer Institute. Today we'll discuss about what is DOS. Then after, DOS operating system. For that, the commands required for creating as well as creating the directories. Then how we'll create the files, how to read the content of the files. Along with we also discuss date times, okay, and the format of them. If time permits, also we'll try to discuss some part of external command as well. But what are the things we discussed just now? That is the internal command. And if time permits, we'll also discuss the external commands. So let's quickly start with DOS. So before moving to commands, so let's discuss what is DOS actually. So in general, what is DOS? DOS is nothing but a operating system, which is DOS stands for disk operating system. Okay, generally the early stage of computer was what? The early stage of computer first the computer आस्तिला एटा को वर्जन आस्तिला से DOS वर्जन जोटा कोन हला तमो CLI इंटरफेस जा कोन CLI इंटरफेस जोटा हला कोन तमो कमांड लाइन इंटरफेस LINE command line interface, meaning whatever the work we will do in the DOS we will only able to do through the commands. तो हमें केवल कमांड थ्रू जाते हैं ऑपरेशन करिया केवल का थ्रू करिया थ्रू द कमांड्स. विदाउट कमांड वी कैन डू एनीथिंग इन द DOS. बिना कमांड हमें किसी कर परिबेन. ओके, तो ता पय कोन दरकार प्रॉब्लम कोन होत रहला कि गोटे नॉर्मल लोक जे सेतिकी एक्वाइंटेड नुहे कंप्यूटर सहित ताकू माने काइंड ऑफ इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड ऑल द कमांड्स टू रिमेंबर ऑल द कमांड्स जे पाठ पढिनी ठीक से गोटे नॉर्मल तार कोन गोटे बिजनेसमैन. ओके, तार एते कंप्यूटर डिटेल जानिया कोन दरकार गोटे छोट दुकान धर करिछि से चाहूछि कोन मोर जते छोट गोटे इन्फॉर्मेशन से इन्फॉर्मेशन कोन करबी स्टोर करबी इनसाइड माय कंप्यूटर ताले ताको तो मु स्टोर करी कोन दरकार मते कंप्यूटर विषय पूरा नॉलेज जानिया दरकार कि मोर दरकार ने मोर सिंपली कोन कंप्यूटर ऑन करी किसी मोर टाइप कली से मोर कोन हो स्टोर हो इनसाइड माय कंप्यूटर तो मोर रिक्वायरमेंट हो मु ता कोन सीधा ओपन करी आ देखि. पर ता पय जदी मु गोटे कोर्स करी ता पय गोटे डिटेल्स मु पढी भी पा सिखि जाइके देन गोटे हमर ये पय कोन सेटा हो वेस्ट ऑफ टाइम गोटे माने गोटे बिजनेस में एटा कोन होला वेस्ट ऑफ टाइम से एते टाइम स्पेंड कर परिबोनी से सब जिंस. ओके, तो ताकू हमें कोन करिया ओवरकम करिया पय कोन आसला तमरो विंडोज आसला कौन आसला तुम Windows the first one is Windows XP I believe. Okay, Windows XP then asla tomorrow Windows Vista then asla Windows 7 then Windows 10 बर्तमान tomorrow Windows 10 और 11 दिटा के चलछि मार्केट. ओके, तो एटाला कोन tomorrow Windows ऊपर तो हमें ताला में तो Windows को हम पढु जंती Windows मार्केट आसी साइलेंट ताल DOS कैन सिखिया DOS के बेनिफिट कोन हमर बेनिफिट ये लेट्स से काल तुम गोटे DOS ऑपरेटिंग सिस्टम गोटे सिस्टम दे किनलो लैपटॉप आनलो गोटे कोथो तुम DOS रोच डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कार्ड लैपटॉप रोच तो कोन करे त कोन की तो तुम DOS न जानते कोन करियो बंद करके आइदर ता रिटर्न करियो नॉलेज डस्टबिन में पके दो ए होउनी किछ खराब ये सिस्टम नो ब्लैक स्क्रीन किछ आसुनी एटी कोन दरकार तुम यदि विंडोज DOS कमांड जानिथिबो ताल तुम कोन कर पर ताको प्रॉपर्ली पार्टीशन करके आ तुम विंडोज बरा इंस्टॉल कर परियो. ओके, इवन इफ जब तुम DOS कमांड न भी जानिछ एबे काले आजिकल आसिलानी किछि बूटेबल अलगा सिस्टम तुम बूटेबल पेन ड्राइव करके आनी ताको लगेगी करि परियो बट जानितले बेटर. अपार्ट फ्रॉम दैट दर किछि तो मोटे लिनक्स फैमिली रिलेटेड बा यूनिक्स फैमिली रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम गलो जेमति कोन हला तमरो लिनक्स हला ubuntu हला यूनिक्स हला ubuntu जो हटो ubuntu हला एमान सब कोन एमान मैक्सिमम जहां भी हम काम करन एमान दियंते GUI दियंते GUI माने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस माने GUI बेस दियंती बट स्टिल भी ते कोन तुम काम करे पेन दर गोटे पेन ड्राइव लगे मु डायरेक्ट मु पेन ड्राइव काम कर परिबिन को तुम लिनक्स कर परिबिन कोन पाई दरकार पेन ड्राइव लगे कि डाटा रीड करे तुम फास्ट कौन दरकार माउंट करा पड़ो
माउंट केमती करियो थ्रू द कमांड्स ओके से कमांड गुडाक पाखापाखि का कमांड वाला 10 पाखापाखि कमांड तो 10 जे तुम शिखी दिबो ताल बेटर हो कोन हो अलगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम सब अछि से मानकर कोन जो कमांड सब अछि तुम इजीली शिखी परियो इजीली ताको रिमाइंड कर परियो जस्ट हल्का कोन अछि लिटिल बिट पाखापाखि कमांड सब होता जेमिति cd डबल डॉट मु मारुच कोथरे हमर 10 रे सेक्टी मारू cd स्पेस डबल डॉट है ना लिटिल बिट डिफरेंट बट काम पाखापाखि दियंग समान तो बेटर कोन तुम फ्यूचर के भलो ऑपरेटिंग सिस्टम शिखिलो तो तुम यूजफुल हो कोटा जब तुम डॉस कमांड्स जानि थियो बुझियला इथे हम कोन करिया डॉस पढ़िया क्लियर ओके तो डॉस कोन उडे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जे कोन करूची तोर कमांड लाइन इंटरफेस को करोची आ यार केते प्रकार कमांड अछि दी प्रकार कमांड अछि टाइप्स ऑफ कमांड टाइप्स ऑफ कमांड्स केते प्रकार दी प्रकार टोटल कोन तमरो इंटरनल आउटे कोन तमरो एक्सटर्नल ओके दी प्रकार कमांड तो जनरली इंटरनल माने छोट मोट आम सिस्टम ऊपर जो ऑपरेशन करवा सेटा कोन पर इंटरनल एक्सटर्नल कोन जोटा आम सिस्टम फॉर्मेट करवा किछ गोटे हार्ड डिस्क कॉपी करवा ओके ड्राइव किछ गोटे फॉर्मेट करवा हला से सब जिनस काम का थर हो एक्सटर्नल काम रो एक्सटर्नल कमांड थ्रू रे हो ओके तो इंटरनल कोन एक्सटर्नल कमांड कोन सब अछि हम आगु पढ़िया तो एबे हम डिस्कस कोन करिया आज रो एजेंडा डिस्कस कोन करिया हम इंटरनल कमांड्स तो इंटरनल कमांड्स सब के आसी हमरो डेट आसीओ टाइम आसीओ आ कोन आसीओ तमरो एमडी आसीओ dir आसीओ देन cd आसीओ cd डबल डॉट आसीओ cls आसीओ कॉपी आसीओ कॉपी कौन आसीओ कॉपी कौन आसीओ नेक्स्ट डिलीट आसीओ ओके डिलीट आसीओ देन rd आसीओ रिमूव डायरेक्टरी rd आसीओ व्हाट नेक्स्ट path आसीओ टाइप आसीओ व्हाट एल्स what else rd path type what rename correct ren okay rename so these are the internal commands we will discuss today okay so first of all to write the command I need an interface what is the interface that is the command line interface the command prompt need to be come तो command prompt केमती आसी हमरो दुटा व्यू अछि कोन करिवो सिंपली सर्च को जीवो सिस्टम रो सर्च करिवो cmd मारिवो हम गोटे कमांड लाइन पळि आसीबो नल कोन करिवो विंडोज प्लस r की मारिवो मारला पर एटी कोन आसीबो तमरो एंटर करिवो कोन cmd so it will open the command prompt ये तुम कोन दो command prompt ओपन करि दो by default open कोड हो तमरो c users then the name of the device मोर सिस्टम ना आला मुक्ति तो मुक्ति डिवाइस ऐड कोन लागि ओपन हला यदि मो दरकार आउ किछि ताल मोडा कोन करबी चेंज करबी बाय यूजिंग द कमांड से जो कमांड अछि ता भीतर किछि कमांड मो यूज कर कोन कर ताको मो चेंज करबी टू वर्क विथ दैट ओके तबे कोन करिया फर्स्ट कोन करिया हमें डेट यूज करिया सो लेट मी क्लियर दिस ओके ओके मु जस्ट कोन करली मु ड्राइव चेंज करली डी कोलन जो ड्राइव तुम जिबार अछि से ड्राइव देबो देन द कोलन इट विल मूव टू द करेस्पोंडिंग ड्राइव d colon is used to move into the d drive को मूव करिया पे कोन यूज करली मु d आउ colon ओके ये कोन करे मूव करबो d drive तो ड्राइव कोन व्हाट इज ड्राइव इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ योर हार्ड डिस्क सो हार्ड डिस्क मु जो डिफरेंट पार्टीशन करली आ ईच पार्टीशन कोन करी गुटे मु ना देबी
ताकू मु कोन कोइ गुटे ड्राइव कोइ ओके तो सिस्टम ओपन कर देखियो सी ड्राइव डी ड्राइव ई ड्राइव एंड these are the part of your hard disk or SSD जहाँ तुम सिस्टम अच्छी ता करेस्पोंड जो पार्टीशन तुम करिजो से पार्टीशन हम कोन कहया ड्राइव कहया गोटे क्लियर नेक्स्ट फर्स्ट कोन अछि मोर डेट अछि कोन करी मु DATE date so what will give the current date is the system रे जो current date अछि से current date कोन करे तुम शो करबो के डेट सिस्टम और करंट डेट तो सिस्टम और डेट मोर फुल अछि तार रिजल्ट डेट भूल आसीबो तुम एक्सपेक्ट करबोनी कि आज डेट ठीक अछि एंड कमांड मोर भूल कमांड गेट कोड करबो तुम सिस्टम रो गेट करबो तो सिस्टम इटसेल्फ हैविंग द रॉन्ग डेट देन द वैल्यू आल्सो विल बी रॉन्ग ओके तो एटी कमांड करिया आगे तुम आकर देखिया दरकार कि मो सिस्टम रो डेट मोर ठीक अछि कि नै तो मो सिस्टम डेट और टाइम ठीक अछि देन मो डेट एंड टाइम द रिजल्ट ठीक आसीबो जदि ये भूल अछि ताल मो रिजल्ट भी भूल आसीबो तो नेक्स्ट तो डेट हम कौन डिस्कस कलो डेट व्हाट इज डेट डेट र काम कौन इट विल रिट्राइव द डेट द current date the current date of the system current date of system ओके सिस्टम रो करंट डेट रिटर्न किए करे तमरो डेट कमांड नेक्स्ट कोन करिवो सिंटैक्स व्हाट इज सिंटैक्स सिंटैक्स नथिंग बट द रूल्स एंड रेगुलेशन वी नीड टू फॉलो टू राइट द कमांड गोटे कमांड लिखिया पय जा हमें रूल रेगुलेशन फॉलो करिया ता कोन कहया हमें सिंटैक्स सिंटैक्स मींस सिंपली द रूल और रेगुलेशन ओके तो कोन करी मु c:/ c मु अज्यूम करती c बोली मो केस रे कोन अछि d अछि तो मु d नै होछि d:/ देन कोन करिवि डेट देन एंटर ए सिंबल टा मु कोन पे दोछि फॉर द एंटर की ओके मु डेट लिखला पर सिंपली मु एंटर करी एग्जांपल एग्जांपल कोटा मोर एटा ला मोर एग्जांपल ओके तापर देखा एटो देखियो कोन कहै एंटर द न्यू डेट जब तुम डेट वगैरह किसी चेंज कर ताल कोन कर तुम एई फॉर्मेट दे परबे mmddy अदरवाइज यू कैन क्लोज द कमांड कमांड कैन क्लोज करबो बाय प्रेसिंग द ctrl control plus c what it will do it will close current command execution current command execution current command execution ता माने ए जो ब्लिंक होची त म ए कोन पे होची त माने कमांड ता मोर क्लोज हेई नै जाय ता पर मु काम मु करूची त म कंट्रोल प्लस सी मारिबी कोन हला डी ड्राइव पळेला ना मोर ता माने या काम सरी गला कमांड काम शेष आई कैन राइट द न्यू कमांड बुझियला क्लियर डेट एटाला मंथ dd the date then the year तो एटा मोर कोन हला ए फॉर्मेट रो मु कोन देछि एठी मु यूज करछ क्लियर नेक्स्ट आपन कोन टाइम अगेन एटा टाइम दला एटाला मोर कोन ए फॉर्मेट कोन ए टाइम रो ओटाला hh hour then minute then second then millisecond एटाला कोन मोर फॉर्मेट ऑफ टाइम बुझियला तो ये गला मो डेट रो नोट डाउन हे जे नेक्स्ट ला टाइम टाइम ओके टाइम कोन करिवो it will return the current system टाइम ओके एबे कार सिस्टम टाइम रिटर्न के करे तमरो टाइम कमांड देखा समझ को नेक्स्ट सिंटैक्स ओके सिंटैक्स कोन करिवो c:/ सॉरी यस
D colon slash then तुम कौन करेंगे टाइम enter. Okay, so what it will do, the example कोड हमरो एटा टाइम, then you can press Ctrl plus C to close the current execution of the command. तुम कौन करी देखो जब तुम Ctrl plus C करने D आसी कि पुनी D आसेनी Ctrl plus C कले कौन हबो ए कमांड एग्जीक्यूशन बंद हो जिवो कंप्लीट हो जिवो एला पर कौन स्टार्ट हबो D स्टार्ट हबो सते कोड कोले आसो या पछु बस देखो Ctrl plus ओनली आगु को आस ओके हेलो क्लियर नेक्स्ट डेट एंड टाइम क्लियर ये डाउट हो कार किछि ओके नेक्स्ट एमडी नेक्स्ट कौन है कौन आमर एमडी और ता कौन कहते एमकेडीआईआर ओके एमडी और एमकेडीआईआर जोटा मारले भी चलो ओके तो एमडी stands for make directory DIRECTORY make directory. What is directory? Directory is nothing but in DOS language we told that as a directory, but in the Windows को ऐसा हम कौन कहते folder कहते तो folder को हमें DOS से कौन कहते हमें directory कहते this is nothing but folder okay folder बट तुम DOS पढ़ो तो folder कहबो कौन कहबो directory हां directory next मु एमडी रे कौन कली क्रिएट कर देली कोन सॉरी एमडी से कौन करी मु डायरेक्टरी उठे मु क्रिएट करी now what it will do it will help to create a directory तो डायरेक्टरी क्रिएट पे हेल्प किए करियो मते एमडी क्रिएट करियो एंड सिंटैक्स कौन सिंटैक्स md d:/md then name of directory .dir okay name of the directory clear md कौन करियो सिंपली क्रिएट करो डायरेक्टरी केंति करी मु md then name of the directory next હવે कौन करे example कौन करी मु d:/md then कौन करी मु PTL okay then enter what it will do it will create a directory with name PTL inside whom inside the D drive so output कौन आसो एठी PTL directory will created inside D drive भीतर गोटे PTL कर डायरेक्टरी क्रिएट हबो आ कोड पड़िबो से D drive भीतर पड़िबो ओके क्लियर नेक्स्ट एड कोन करिया हमें क्रिएट करिया गोटे md then PTL तो कौन हला मोर PTL से क्रिएट हे गला कि एरर दे कि एरर दे ता माने मोर कौन हला PTL क्रिएट हला केन देखिया चलो D drive भीतर को बट एठी देखियो केम देखिया हम आगु डिस्कस करिया कमांड थोर केमते हम देखिया क्रिएट हला कि नहीं बट एबे देखि दे कली तमर कोन फाइल एक्सप्लोरर रे एमि से देखाउछ हम गले फोल्डर एक्सप्लोरर भीतर को हला तो कोड जे हमें दिस पीसी D drive भीतर मु जेबे दिस पीसी और D drive अछि लोकल डिस्क D तो D drive भीतर जाओ या त कोन एक्सपेक्ट करछु PTL एक्सपेक्ट करछु अछि PTL केतरा क्रिएट होईची 17 तारीख 10:52 माने बे कोन एटा गोटे ये गोटे फोल्डर बुझला जाम कोन कोथि गोटे डायरेक्टरी जाका हम कहउछन कोन 10 लैंग्वेज कोन कहउछन तक हमें डायरेक्टरी क्रिएट होईची कोच तम D drive भीतर ओथने PTL केतरा बेले
17/4/2025 10:52 AM रे क्रिएट ହେଇଛି कौन सेटा गोटे फोल्डर से ओके क्लियर तो ये जिनस आम कौन करिया देखिया केमती इनसाइड द बाय यूजिंग द कमांड्स नेक्स्ट क्लियर एमडी ओके आम कौन करिया चलो पॉइंट राउंड को चलो मैं कौन करी एमडी मोर माने पीटीएल जो क्रिएट हैला कि नहीं चेक करी केमती वो कमांड यूज करी मु चेक करी से कमांड ना हला dir ओके dir कमांड यूज करी मु कौन करी चेक करी परिबी मोर कोन कोन डायरेक्टरी बा फाइल्स अच्छी इनसाइड द डायरेक्टरी को डायरेक्टरी भीतर बा को ड्राइव भीतर कोन कोन कंटेंट अच्छी मु देख पारी केमती बाय यूजिंग द dir बा डायरेक्टरी dir स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरी directory it is used to it will list out all the items available inside a directory ओके तो डायरेक्टरी भीतर कौन कौन मोर अच्छी कौन आइटम्स अच्छी माने फाइल फोल्डर कौन सब डायरेक्टरीज कौन अच्छी से सब लिस्ट आउट किए करे तमरो dir ओके तो सिंटैक्स एटा हम दी प्रकार लिख पारिया माने कोन धर मु अच्छी दाउ चाहूची द dir सिंपली एतिकी मु लिखली ये कोन करिवो it will list out all the contents available inside the dir directory मैं d drive रो भीतर कौन कौन अच्छी एक रिटर्न करिवो एमती लिखले तद मु एमती लिखुची एटा कोन करियो फर्स्ट it will return the contents available in d drive तो तुम एमती लिखली एटाला 1 and 2 d:/dir then the name of the directory तो एट जो नाम देली से नाम भीतर से डायरेक्टरी भीतर कौन कंटेंट अछि के शो करेबो तुमको dir शो करेबो लेट्स से कोन कहली हम एग्जांपल कोन देली d:/dir ptl that means what it will do output it will list out all the contents available in the ptl directory it will list out all the contents available in ptl ओके पीटीएल भीतर कौन कौन कंटेंट अच्छी शो करबो के जदि मु dir देन द डायरेक्टरी नेम देल नल कौन करबो ए जो पाथ एटा कोनती पाथ जो लोकेशन से लोकेशन लास्ट जो डायरेक्टरी थिबो तार कंटेंट से देखो मोर लास्ट के अछि केवल डी अछि सही स्टार्ट सही लास्ट तो डी ड्राइव भीतर जति कंटेंट थिबो तो दो शो के करबो dir क्लियर तो अठमारो डी ड्राइव dir तो कौन करे करिए dir देखता माने कोन हो जते सारा कंटेंट अछि का भीतर डी ड्राइव भीतर देखो तो एंटर मारो आइला सब देखो या तो पीटीएल अछि अरे अछि पीटीएल एटा कोन ओडे पूरा डायरेक्टरी काई लिखि जेटी dir लिखा अछि डायरेक्टरी एटा कोन मोर ओडे अछि जी फाइल इट अछि ते कोन एटा मोर अछि ब्लैंक अछि ई ड्राइव ओडे शॉर्टकट पड़छि ओडे एटा फाइल सेते कोन अछि ब्लैंक अछि जोटा मोर ब्लैंक थिबो सेटा कोन मोर फाइल जोटा dir लिखा अछि ओडा से डायरेक्टरी बा तमरो जोटा कोन विंडोज लैंग्वेज कोन को ताको फोल्डर बुझियला क्लियर dir क्लियर
है नेक्स्ट नेक्स्ट ला कौन तमरो सीडी नेक्स्ट ला कौन सीडी क्लियर है चला था ओके नेक्स्ट डीआर दी प्रकार कहली गोटेला कौन जब तुम यही डायरेक्ट डीआर मारली कौन कला लिस्ट आउट कला कार तो द ड्राइव डी ड्राइव जब मैं कौन करी डीआर देन कौन करी पीटीएल देली डीआर पीटीएल देली एबे एंटर कली तो कौन दला ये 0 फाइल्स 0 बाइट्स माने कौन ये जो पीटीएल ड्राइव ता इधर किछि नै बुझियला अछि हम जस्ट अबे क्रिएट करला ना पीटीएल ड्राइव ता इधर किछि नाही एबे मो पीटीएल जो डायरेक्टली क्रिएट करली मु ता तो एबे कंटेंट किछि नाही तो कंटेंट मु ऐड करी केन ऐड करबी आ भितरु जीबी फर्स्ट आ भितरु जिया पे कमांड कोन हमरो cd देन ptl ओके cd देन कोन करली मु ptl एंटर तो कोन कला ये एठी कोन देख डी ड्राइव थिला ना खाली डी ड्राइव थिला कोन हला डी ड्राइव कोलन ptl हला ता माने ए जो डी ड्राइव रो कोन कला मु एबे ptl भितर अछि ओके एडी सिंपली मु dr मारिबी भी ता कोन आसो ये ब्लैंक आसो काहे कि मु डी ड्राइव भितर अछि तो डी ड्राइव सॉरी ptl भितर मु अछि तो ptl कंटेंट ये शो करबो कि मते dir शो करबो हला तो चेंज cd कोन पे दरकार cd cd कमांड cd stands for कौन टाइम यूज कराला ये गोटे डायरेक्टर थिली मु एबा कोडी आसिली आउट डायरेक्टर आसिली ता माने कोन हला चेंज डायरेक्टरी हला cd stands for change directory okay cd stands for change directory माने ओटा डायरेक्टरी मु चेंज करबी को आदर तो द cd देन ला सिंटैक्स cd सॉरी फास्ट कोड मु अछि लेट्स से मु अछि कोड डी ड्राइव एड कोन कहले मु cd ओडी गेला cd cd then name of the directory जोठी मु जिबा चाहूँ ता ना बा टारगेट डायरेक्टरी ओके जोठी मु जिबा चाहूँ एबे कोन करमु एग्जांपल एग्जांपल कोन करले मु cd slash cd then ptl enter what it will do it will go inside the ptl what will the output will be d:/ptl then this okay that means it is inside the ptl okay now I am inside the ptl clear cd command जान पाइलो बुझिरन अरे मु थिले कोठी डी ड्राइव रो थिले डी एटा ए जो देखु न ए जो ब्रैकेट पूर्व जति रहला से तुम कोन कहबो कोठी मु अछि एबे करंटली को जगह रे मु अछि एठी मु कोन डी कॉलम खाली अछि ता माने मु डी ड्राइव भीतर अछि ताडू कोडाउ जायनी तो डी ड्राइव रे मु कोठी जिबी पीटीएल को जिबी तो कोन यूज करी मु cd चेंज डायरेक्टरी कोठी की मु जिबी जे मु कोठी पीटीएल को जिबी तो एटा तो मात्र से कोन कला डी ड्राइव पीटीएल भीतर को पळला ता माने कोन एबे अछि मु जदी एटा लास्ट कोड होछि पीटीएल होछि ता माने आई एम इनसाइड द पीटीएल भीतर मु अछि तापर मु कोन करी जहा मु क्रिएट कर जहा मु ऑपरेशन करबी से कहा पर हबो ऑन टॉप ऑफ द पीटीएल डायरेक्टरी पर हबो क्लियर नेक्स्ट cd क्लियर नेक्स्ट okay till now we cover what date time md dir cd okay and so I think if we will cover other commands the video will be really lengthy so maybe I will cover this
the remaining commands of internal sections of DOS maybe in the next lecture. Okay. So till that, let us know if you have any doubts, any concerns, any issues. So we'll happy to solve that. Till that, bye bye and take care. Thank you.